and a very warm welcome to all of you from NRI College. So today we are going to have Impact Lecture Series Session 2. And I'm very happy to tell you this that we are already done with the first session, which was really great. And our students learned a lot in that session. So first of all, I would tell you about this. I would like to tell you about this series. So Impact Lecture Series. Today we have session 2. So these series are conducted by Institute Innovations Council of NRI Institute of Information and Science and Technology, sponsored by MOES Innovation Cell and AICTE. Under this series, we are going to have two lectures. First lecture will be delivered by Mr. Arbab Ahmed. Welcome, sir. Let me tell you about the Arbab Ahmed, sir. Sir, Arbab sir is working as a system analyst and a team leader in Sabit Software Private Limited. Arbab sir has 8 years of experience in software development. He has done work with the Worldline, which is one of the European leaders in payment and transaction services. And sir has done work on Java 17, RESTful web series, and a lot. So without wasting the time, I would request to Imran sir to say a few words. Yes, so Imran sir, I would request you to say a few words for our today's speaker. Thank you so much, ma'am. As well as motivate to our students as well. Yeah, exactly. Thank you so much, ma'am, and thanks a lot for giving me this opportunity to speak over this. And now this impact series, what exactly this impact lecture series is all about, for making the students grow for their internship or entrepreneurship or innovation and IPR. Like the students nowadays are doing very good in software, and the software market is very going upscale. So we need some more efforts from the student side as well as from the faculty side, and few lecture series like this only, so that the student can learn the things, and they could be an entrepreneur or an businessman, business tycoon, and the day after, like 10 to 20, 10 to 15 years of experience, they can be move on for any of the companies, and they can run and they can give the employable skill to the society. So talking about this particular ICC event, this Innovation Council has chosen us for NRI Institute for giving the expert lecture series, the impact lecture series, and this is the session 2. The speaker, I would like to welcome our speaker, our renowned Mr. Arbab Ahmed from Sybase. And Sybase is a very small company in 1995. It started, and then they have grown up their business in Netherlands, Poland, US, UK, and across the globe. So Arbab, I personally know him, and he is one of my finest students, and I am pretty much sure and pretty much proud about him, because he is the only guy who has scored who has corrected all the like 54 questions in SCJP. I do remember that that year was like 2012. So Arbab is doing good, and I wish Mr. Arbab Ahmed for his future endeavors. And also, I would like to wish all the students, like they can be a good innovator, they can be a good entrepreneur if they like to do it. Like if they started their career from a junior software engineer, they can be team leads and project manager as well. For 10 to 15 years of experience, you can have your own company also. So attend this lecture seriously and with full zeal and enthusiasm, so that you can learn and you can understand things, what exactly software industry is all about, and what are the working flow and what is the business behind this. So now I give my heartily thanks to our director sir, our HOD sir. Some work has been pending, so they are not be able to present in this particular session. And I would like to convey from my side, I welcome them also for this particular session number 2. And our very own beloved chairman sir, Mr. Subodh Singh sir, for giving us the opportunity for creating this ICC cell and for having this expert lecture series. So now I would like to give my heartily welcome to Mr. Arbab Ahmed, and we may start with the proceeding. Thank you so much.
Thank you so much, Imran sir and Shushri ma'am, for your kind words. It's an honor to give presentation to such an organization like NRI, which is growing very much. And it's an honor to speak in front of you. Like Imran sir teaches me a lot during my engineering. And good morning, everyone. Good morning, NRI students. It's like I'm Arbab Ahmed. I'm having experience of 8 years in software industry. I was an engineering student like you. I completed my B in 2011, and later I done my MTech as well. So I have been working with cyber software since 2014, and as Imran sir told, it's a small organization, 1995, but over the period of 25 years, it grows a lot. And right now they are having capacity of 12,000 employees that are working in different cities in India as well as across the globe. And talking about my clients, so I'm working with the Worldline. It's an payment industry that is leading in Europe, and it has clients like PayPal, Spotify, Expedia, and we are handling transaction of such big clients. So it's a great experience working with different people and having a cultural diversity. Like if you are working with people that are working in France or Italy or in Iraq, so we get to learn a lot from cultural diversity as well, like what they are doing there and what we need to improve at our side. So I was an engineering student like you. I have done my Java certification 2012, and after that I joined industry. So more apart from presenting my presentation, the idea of this session is like you will be motivated to do things. Like I have done engineering like you, and in last 8 years I have learned a lot. And in next 8 years I have been like Imran sir told, like I can start my own industry. I can innovate something new. And my friends also are doing something like that. Like they are having an industry. They are having some organization. Recently, my friend organization has been overtaken by SAP. So 75% shares is means SAP has 75% share of his organization, and he is having 25%. So you can start your own industry. You can start your own technical institutes. So coming to the topic, today's topic. So I will present you PubSub model architecture. It has been used currently in industries a lot in software development cycle. And I will tell you about how it is fitted currently in the environment. Just bear with me, I will share my screen. So are you able to share my see my screen? Yes, we can see your screen. Yeah, so I will take it as an open lecture. So any student which has any doubt can ask me any question at any time. There's no foundation that I will only speak and you will listen all the time. Sir, sorry for interrupting you. Students, बच्चों मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि प्लीज बी इंटरेक्टिव ड्यूरिंग द सेशन. ये जो सेशन है ये आप ही के लिए है एंड देयर इज नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज. आपको जो भी बात या कोई भी डाउट हो या कुछ भी आप जो जानना चाहते हैं प्लीज अरबाब सर से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, पूछिए, जानिए, क्योंकि इस सेशन का जो मोटिव है वो यही है कि आप सीखें. ओके, सो ट्राई टू बी इंटरेक्टिव. सर अरबाब सर प्लीज प्रोसीड. Sure, thank you. Yes, like Shushti ma'am said, there's no barrier of language, so you can ask question in any language, and I will try to present my session in both the languages. I will try. Yeah, so today's topic is PubSub architecture or publish subscript architecture. Moving ahead. Yeah, so what is PubSub? So PubSub is basically a model or architecture
It is a form of asynchronous service-to-service communication using serverless and microservices architecture. So there are many terms which comes in only the first sentence, like asynchronous service-to-service communication, serverless, and microservice architecture. So basically, PubSub model is a form of asynchronous service-to-service communication that has been used in serverless and microservice architecture. So now, what is asynchronous service-to-service communication? Asynchronous service-to-service communication means there is no time foundation when two services are talking to each other. For example, if service A talks to service B, then service A will not wait for the response of service B. Means if service A sends a request to service B, it will not wait for the acknowledgement. Correct? So we try to make this session more synchronous rather than asynchronous. Means if I'm saying something, I will accept students to talk to me in response. So that is kind of synchronous communication. And here we are talking about asynchronous service-to-service communication. Means if a service talks to another service without waiting for its acknowledgement. So PubSub model is a asynchronous service-to-service communication that is used in serverless and microservices architectures. And what is serverless? And what is microservice architecture? So microservice architecture is basically an architecture that follows dividing of services into smaller parts so that each service works independently. And no service is dependent on other service, right? So basically PubSub model क्या है? एक asynchronous form of communication है दो services के बीच में, जिनको अगर एक सर्विस दूसरे सर्विस को डेटा भेज रही है या कुछ रिक्वेस्ट कर रही है तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि दूसरी सर्विस उसको रिस्पॉन्स उसी टाइम पर करे, राइट? और ये कम्युनिकेशन कब यूज होता है? ये कम्युनिकेशन यूज होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स में। अब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है? हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम को, एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम को, एक बहुत बड़े मॉडल्स को हम स्मॉलर चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे इंडिपेंडेंट स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करते हैं कि हर चंक्स इंडिपेंडेंट है और उसकी अपनी एक डेडिकेटेड जॉब है। फॉर एग्जांपल, आपके डिपार्टमेंट में आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट? तो हर सब्जेक्ट क्या है? एक सर्विस है और वो सर्विस हमने इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर दी है और वो सर्विस इंडिपेंडेंटली आप लोग लर्न कर रहे हो, राइट? दो वो सर्विस आपस में इंटररिलेटेड है, एक सर्विस का यूज दूसरे सर्विस में है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं तो आप लोग मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, राइट? तो मशीन लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग और इट्स अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग। बट सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग टॉपिक को भी मैं मल्टीपल सर्विसेज में डिवाइड कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग को एक सर्विस हो जाएगी सुपरवाइज लर्निंग और उसकी दूसरी सर्विस हो जाएगी अनसुपरवाइज लर्निंग, करेक्ट? सिमिलरली जब हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि कितनी सारी मल्टीपल सर्विसेज वर्क करती हैं। एक सर्विस होती है जहां आप सिर्फ कोई भी प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट वॉच करते हैं। दूसरी सर्विस होती है जहां आप एक प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड करते हैं। तीसरी सर्विस होती है जहां आप ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड अपनी एड्रेस इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड फाइनल सर्विस होती है जो आपका ऑर्डर ट्रैक करती है और आपको फाइनली बताती है कि आपका ऑर्डर कहां से डिस्पैच हुआ एंड कहां पर रिसीव्ड हुआ। सो मैंने एक ई कॉमर्स सिस्टम को मल्टीपल सर्विसेज में डिवाइड कर दिया। हर सर्विस का अपना एक इंडिपेंडेंट टास्क है। जस्ट एक सर्विस दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट कर रही है डेटा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने चेकआउट किया तो मेरी जो शॉपिंग इंफॉर्मेशन है वो मेरी पास आउट हो जाएगी ऑर्डर इंफॉर्मेशन के पास, राइट? सो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन हुआ? असिंक्रोनस कम्युनिकेशन मल्टीपल सर्विसेज के बीच में, करेक्ट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? Okay, moving ahead. So now in a PubSub model, any message published to a topic is immediately received by all the subscriber of the topic. So in PubSub model, 3 entities are involved. First, a publisher, second, a subscriber, and third, a middle layer which handles all the topics. So now what is topic in
What is publisher and subscriber? We come to that in a bit. Third thing, PubSub messaging can be used to enable event-driven architecture or to decouple application in order to increase performance, reliability and scalability. So PubSub messaging हम कहाँ use करते हैं? Enable event-driven architecture को enable करने के लिए and applications को decouple करने के लिए जिससे उसका performance, उनकी reliability and scalability improve हो. Correct? अगर एक ही सर्विस सारे ऑपरेशन करेगी, फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल लेते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का, अगर एक ही सर्विस सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी, कार्ट में ऐड करना, ऑर्डर्स प्लेस करना एंड ऑर्डर की इंफॉर्मेशन ट्रैक करना, तो उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा एंड उसको स्केलेबल करना अगेन डिफिकल्ट हो जाएगा. स्केलेबिलिटी इन द सेंस दैट मल्टीपल यूजर कैन नॉट हैंडल द सेम, मींस even e-commerce website cannot handle multiple user at the same time, so that's the scalability. उसको scalable करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इस टाइप के आर्किटेक्चर इन्वॉल्व करते हैं like PubSub और microservice architecture. So one more thing we have introduced in this are event driven architecture. Now what is event driven architecture? So event-driven architecture basically uses an event to trigger and communicate between decoupled services and is most commonly used in modern type of application. So आजकल जो भी modern application बन रही हैं, वो सब microservices use कर रहे हैं, and then they are more decoupled. Decoupled means, या आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा loosely coupled. So जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो loosely coupled, आइदर उसकी इंडिपेंडेंट क्लासेस लूजली कपल्ड हो या कोई भी सर्विसेज हैं तो उसकी सर्विसेज भी लूजली कपल्ड. लूजली कपल्ड मींस ईच सर्विस हैज इट्स ओन डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन एंड ऑन डेडिकेटेड जॉब एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सर्विस. मींस कोई भी सर्विस जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करेगी एंड वो दूसरी सर्विस पे डिपेंड नहीं होगी अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए. राइट? सो event driven architecture is basically an architecture which is driven by an event. So what is an event? An event can be a change in state. E-commerce website. So event can either carry the state, like events के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है, the item purchase, its prices and a delivery address, or events can be an identifier. Event information भी हो सकती है, event update भी हो सकता है और event identify भी हो सकता है या notification भी हो सकता है that your order has been shipped. So ऐसे architecture जो डिपेंड करते हैं events पर या event driven होते हैं, उनको हम event driven architecture कहते हैं. और ऐसे event driven architecture के लिए PubSub मॉडल हमारा बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. इस केस में जब हमको उनको स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करना होती है, जब हमको उनको एक साथ 4 मिलियन या 5 मिलियन या 6 मिलियन यूजर्स को एक साथ सर्व करना होता है एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर, उस केस में इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में हम PubSub मॉडल या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में PubSub मॉडल इंट्रोड्यूस करते हैं. So event driven architecture has basically 3 components: an event producer, an event consumer, and finally an event router. So a producer publishes an event and router finally filters this event and pushes the events to the particular consumer or the consumer which wants this particular event. Any question on this slide regarding event driven architecture, or what is event and how it is being used in the current software development life cycle? Anyone wants to ask any question related to these topics? Sir, yes. Okay, moving ahead. So this is the basic diagram of the PubSub architecture. Here, as you see, 3 entities are involved. First is publisher, second is topic, and the third is subscriber. So as you see, this publisher here, this is always a service.
It is not a end user. Because in PubSub model, always a service communicate with another service. So publisher will be a service, subscriber will always a service, and here you see our topic. So our topic can be any object-oriented topic or any event that can be published by the publisher and that can be used by the subscriber. For example, in our environment, like I'm working with in payment domain. So we have multiple services. Like we have one module that deals with transactions. We have one module that deals with dispute, and we have one module that deals with settlement. Like there are multiple transaction happens, for example, for any client like PayPal. So there's a service that handles their transaction. Then there's another service that handles their disputes. And there's another service that handles their settlements. What is settlements? For example, we received amount from the end user and we settle this to a PayPal, to our merchant PayPal. So that is settlements. So there are three independent services that are running. For example, first publisher is transaction, second publisher is dispute, and third publisher is settlement. And so what is topic here? So first topic will be transaction, another topic will be disputes, and third topic will be settlements. And depend on the needs of these three topics, there are multiple subscribers who can subscribe this topic and use this information based on their requirement. For example, there is a service that needs to handle or that needs to do the final settlement to the merchant. So which topic they will subscribe? They will subscribe to the settlement topic. There's another service that needs to report the disputes to the end merchant. एक और सर्विस है जिसको एंड मर्चेंट को जितने भी डिस्प्यूट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड वो उनको रिपोर्ट करना है. तो वो सर्विस किस टॉपिक को सब्सक्राइब करेगी? डिस्प्यूट टॉपिक को. सिमिलरली एक थर्ड सर्विस है जिसको एंड मर्चेंट को ये बताना है कि कितने ट्रांजैक्शन उनके पर्टिकुलर डे में हो रहे हैं, डेली ट्रांजैक्शन. तो वो सर्विस किस टॉपिक को सब्सक्राइब करेगी? ट्रांजैक्शन सर्विस. सो ये जो टॉपिक होते हैं ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन, इसके अंदर हम बेसिकली जेसन ऑब्जेक्ट भेजते हैं उस टॉपिक का. बिकॉज जेसन ऑब्जेक्ट या एक्सएमएल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये यूनिवर्सली डिफाइंड होते हैं और इनको यूज करके हम उसको एज एन एपीआई भी यूज कर सकते हैं, उसको डेटाबेस में भी सेव कर सकते हैं और उसको मींस किसी भी वे से यूज कर सकते हैं बिकॉज वो एक जेनरिक वे में हमने स्टोर किए हो एज अ की वैल्यू पेयर. Again, based on the previous slides, the key components that are useful in the PubSub system. So first is publisher. Publisher will generate an event data and publish them to the topic or the middle layer. So second is subscriber. So subscriber submit the subscription, means it submits request that they need either dispute, they need transaction, or they need settlement. So they submit the subscription and process the events received. And finally, there's a middle layer, which is called mediator or broker. So this middle layer will filter and routes event information from publisher to the interested subscriber. Means ये middle layer क्या करती है, किसी भी publisher की information जो publish हुई है उस topic पर उसको लेती है, उसको filter करती है. For example, मुझे filtered data चाहिए तो उसको filter करती है और उसके interested subscriber के पास उस इंफॉर्मेशन को राउट कर देंगे. So there is another example of this where we have multiple publishers which are publishing an events to an event service layer, which has been notified by the event service. And this layer will store and manage all the subscription. So all the subscriber based on their needs subscribe the particular topic or particular information or unsubscribe this information as well. For example, if they want to use this information for only one time or two times, they will subscribe it and will unsubscribe it later. इसका सिंपल एग्जांपल है अपनी डे टू डे लाइफ में. तो अगर एक ही पब्लिशर है और एक सब्सक्राइबर है, राइट,
फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है जिसके पास नोट्स हैं और मल्टीपल स्टूडेंट्स, राइट, तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बनाएगा और एक इवेंट सर्विस पर पब्लिश कर देगा, करेक्ट, और उस टॉपिक की मल्टीपल कॉपीज इस इवेंट सर्विस पर प्लेस होंगी। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उस टॉपिक को वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं एक ही बार में। अदरवाइज क्या होता कि पब्लिशर एक स्टूडेंट को टॉपिक देता, देन वो स्टूडेंट उस पब्लिशर को रिटर्न करता, देन सेम पब्लिशर सेकंड स्टूडेंट को टॉपिक देता, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन। So it will save time, it will increase the stability, scalability, and it is more reliable because publisher will know that they are subscribing the topic in their own format and in their own way. Yes, sir. So any question till now, or any other question that you have related to anything? No? Or it's too early in the morning? Like you can ask any question. There's no bad questions or there's no small question. You can ask any question related to anything. Okay, we will continue ahead. So what we are using previously is request response model or a request response thing, which is we used earlier, like 2 or 3 years before. And it is good. It is not bad, but it has some limitations. That's why we have been migrated to PubSub model, and we are using this PubSub model in GCP environment, that is Google Cloud Platform. So what we are doing right now is we are publishing our data to the Google Cloud Platform, and from there, subscriber will subscribe the information based on their needs, right? So what we used previously is request response model. So what is request response model? For example, there's one user that want to fetch some information from the web service. So what will they do? They will call the web service through a GET call, right? Using an HTTP protocol. So HTTP is a serverless protocol, sorry, stateless protocol, means it does not use any, it does not maintain any state, right? So कोई भी यूजर होता है, जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन फैच करते हो या कोई भी वेबसाइट हिट करते हो, तो आप क्या कॉल करते हो, उस पर गेट कॉल करते हो। किसी भी HTTP प्रोटोकॉल में 4 टाइप के कॉल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जब भी आप आगे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, तो HTTP प्रोटोकॉल आपको मेनली यूज करना ही होगा अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट से या कोई भी वेब रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो कोई भी प्रोटोकॉल जब आप यूज करते हैं तो आपको बेसिक 4 इंफॉर्मेशन उसमें होते हैं। फर्स्ट इज गेट कॉल, दैट यू वांट टू सर्च एनी इंफॉर्मेशन। सेकंड इज पोस्ट कॉल, दैट यू वांट टू फीड सम इंफॉर्मेशन इनटू दैट सॉफ्टवेयर। थर्ड इज अपडेट कॉल, मींस यू वांट टू अपडेट एनी इंफॉर्मेशन, so that is done by put call. And fourth is delete, right? So whenever you build any software, या हम भी कोई जब नया इंटर्न आता है, जब हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, तो हम उससे बेसिक ये कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम उसको ये बेसिक 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। क्या कोई एक छोटी सी वेबसाइट बनाओ जिसमें आप ये 4 इंफॉर्मेशन परफॉर्म कर, गेट, पुट, अपडेट एंड पोस्ट। सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल में क्या होता था, एक यूजर गेट कॉल करता था वेब सर्वर के पास, एंड देन वेब सर्वर उस कंटेंट को रिटर्न कर देता था फाइनल। तो ये कॉल जो है ये भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक असिंक्रोनस और दूसरा सिंक्रोनस। सिंक्रोनस कॉल के केस में क्या होता था, जब भी कोई यूजर गेट कॉल करता था तो वो वेट करता था उस रिस्पॉन्स का, या कोई सर्विस दूसरी सर्विस को गेट कॉल करती थी तो वो वेट करती थी उस रिस्पॉन्स का दूसरे टास्क करने से पहले।
सेकंड क्या होता था, asynchronous कॉल. Asynchronous कॉल्स में क्या होता था, गेट कॉल कर दिया and they will move on to do the another things while the server will respond to that particular get call. So this is called asynchronous call. तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में अब लिमिटेशन कहाँ आती थी, सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन ये थी कि इसके वेब सर्वर डाउन हो गया तो मुझे बैड सर्वर रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो मुझे 500 एरर रिस्पॉन्स आएगी. सेकंड थिंग, इसको हम स्केलेबल कर सकते थे, मींस अगर मल्टीपल यूजर एक वेब सर्विस को हिट कर रहे हैं तो हम उसके सर्वर इंक्रीज कर सकते थे. तो फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेब सर्वर के पास गई, सेकंड रिक्वेस्ट सेकंड वेब सर्वर के पास गई, ऐसे मल्टीपल वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को सर्व कर सकते थे. बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती थी, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था. अगर हमें सर्वर ही इंक्रीज करना है तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती थी और परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हो जाता था बट कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाती थी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस अचीव नहीं हो पाती, मींस कॉस्ट इंक्रीज होती जाती. So in the next slide we will talk about where this request response breaks. So for example, here we take another example of YouTube uploading of video. एक यूजर है जो अपना वीडियो YouTube पे अपलोड करना चाह रहा है, करेक्ट. उसने एक वीडियो बनाया एंड YouTube पे अपलोड करने के लिए वेबसाइट को हिट किया. तो YouTube के जो अपलोड सर्विस है वो उसको डायरेक्टली हिट कर रहा है. अपलोड सर्विस उस कंटेंट को ले रही है और सेकंड सर्विस जो कंप्रेस सर्विस है उसको फॉरवर्ड कर देती है, राइट. अब कंप्रेस सर्विस क्या कर रही है, उस वीडियो को कंप्रेस कर रही है जिससे वो यूट्यूब पर कम स्पेस ले. देन कंप्रेस सर्विस विल सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द फॉर्मेट सर्विस. फॉर्मेट सर्विस विल फॉर्मेट दिस डेटा और वीडियो एंड improve its quality. फॉर एग्जांपल ये 144 पिक्सल में था तो इसको 10280 पिक्सल में कन्वर्ट कर फॉर्मेट करके फाइनली नोटिफिकेशन सर्विस को इसका डेटा सेंड कर रही है एंड देन नोटिफिकेशन सर्विस विल सेंड द रिस्पॉन्स बैक टू द यूजर. तो इसमें क्या हुआ, दो ये माइक्रो सर्विसेज हैं. there are multiple services like upload, compress, format and notification service, and they are dependent on each other for their services. But इस केस में sir. सर सॉरी फॉर इंटरप्शन बट प्रीवियस स्लाइड में जो वेब सर्वर्स थे प्लीज उसके कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं. Yes, service is basically a host where you can deploy your services. For example, मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई तो जिस सर्वर पे मैं इसको होस्ट करूंगा दैट इज वेब सर्वर, राइट. आप YouTube या Facebook को जो हिट करते हो तो वो किसी वेब सर्वर पर डिप्लॉयड होता है, राइट. जैसे आप टॉमकैट है दैट इज योर वेब सर्वर. जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो टॉमकैट पर, या Amazon है तो Amazon इज योर वेब सर्विस. जब कोई आप एप्लीकेशन बनाते हो तो Amazon आपको एक स्पेस देता है जहां आप अपने एप्लीकेशन को स्टोर कर सकते हो और वहां से उस एप्लीकेशन को पब्लिश कर सकते हो. मींस वहां से लोग आपकी एप्लीकेशन को देख सकते हैं और उसको हिट कर सकते हैं. तो वेब सर्वर बेसिकली क्या होते हैं, ये एक स्पेस होता है जहां आप अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं वेब के ऊपर. और ऐसे मल्टीपल वेब सर्वर आजकल मार्केट में जिसको हम क्लाउड भी बोलते हैं, जैसे Amazon वेब सर्वर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, Azure एंड डिफरेंट. तो अगर मेरा एक डेडिकेटेड वेब सर्वर है, फॉर एग्जांपल वेब सर्वर अगर मैंने परचेज किया हुआ है और वो मैं डेडिकेटेड अपनी कंपनी के लिए यूज कर रहा हूँ, सो दैट्स इज कॉल्ड, वो भी एक वेब सर्वर हुआ बट वो क्लाउड पर नहीं है, वो मेरा इंडिपेंडेंट है. बट अगर मैं अपनी एक सर्विस बनाता हूँ और उसको मैं क्लाउड पर डिप्लॉय करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, Amazon वेब सर्विस और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. तो बेसिकली वेब सर्विस क्या होते हैं, आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं जहां आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सको एंड दैट विल बी अवेलेबल ऑन द ओवर द नेट. ओके सर, थैंक यू सर. So any other question related to this, where it breaks, request response model is breaking? Yeah. So I'm talking about the multiple services. So यहाँ पे multiple services work कर रहे हैं एक वीडियो को अपलोड करने के लिए
एंड फाइनली नोटिफिकेशन सर्विस नोटिफाई करती है यूजर को कि आपका वीडियो अपलोड हो गया। बट इस केस में क्या होता है, एक सर्विस डेटा दूसरी सर्विस को देती है, थर्ड सर्विस को देती है, फोर्थ सर्विस को देती है, जिससे एंड यूजर का टाइम जो है वो बढ़ जाता है। एंड इसमें एक और फेज है कि फॉर एग्जांपल बीच में फॉर्मेट सर्विस जो है वो किसी एक वेब सर्वर पर डिप्लॉयड है, वो वेब सर्वर डाउन हो गया, तो कंप्रेस होने के बाद मेरी सर्विस उसको फॉर्मेट नहीं कर पा रही, तो उस केस में अगेन एंड यूजर के पास क्या जाएगा, 500 एरर, एंड वो अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। दो हमारी अदर थ्री जो सर्विसेज हैं, अपलोड, कंप्रेशन, नोटिफिकेशन, वो अप है, बट जस्ट फॉर्मेट सर्विस डाउन हो गई, इसलिए हमारा पूरा जो फ्लो है वो ब्रेक हो गया। सो जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल था या जो माइक्रो सर्विस मॉडल था वो अभी भी यूज होता है, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, लाइक ये एलिगेंट एंड सिंपल है, ये स्टेटलेस है, और ये स्केलेबल है। एलिगेंट और सिंपल क्यों है, क्योंकि सिंपल इसमें एक रिक्वेस्ट जाती है एंड सर्वर विल रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। सेकंड, ये स्टेटलेस है, मींस इसमें स्टेट मेंटेन नहीं होती हर यूजर की, तो उसको मेंटेन करना इजी होता है। थर्ड, दिस इज स्केलेबल। जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक सर्विस को मल्टीपल सर्वर पर डिप्लॉय कर देते हैं और मिलियंस यूजर की रिक्वेस्ट आई, तो हम 1 मिलियन यूजर को एक सर्वर से रिस्पॉन्स दे देंगे, 1 मिलियन यूजर को सेकंड सर्वर से, एंड मल्टीपल सर्वर विल हैंडल डिफरेंट रिक्वेस्ट, राइट। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, लाइक इट इज बैड फॉर मल्टीपल रिसीवर्स। अगर मल्टीपल रिसीवर्स हैं तो ये बैड हो जाती है, क्यों, अगेन सेम थिंग, क्लाइंट एंड सर्वर हैव टू बी रनिंग, अगर क्लाइंट एंड सर्वर ब्रेक हो गया तो ये एरर दे देगी। सेकंड, इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा अगर हम इसको मल्टीपल सर्वर्स पर डिप्लॉय करेंगे। एंड फोर्थ, ये हाईली कपल्ड है। हाई कपलिंग मींस ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, अगर एक सर्विस डाउन होती है तो दूसरी सर्विस को उसका इम्पैक्ट होगा। ये इसके डिसएडवांटेजेस थे, इसलिए हम पबसब मॉडल को हमने इंट्रोड्यूस किया अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जिससे ये चीजें हम मिटिगेट कर सकें। Any question around this? No, sir. No, sir. Is it clear or nothing's clear? So everything is clear. So now, how we will overcome this YouTube video upload issue with PubSub model, right? So अब इस एग्जांपल में देखेंगे, मैंने अपलोड सर्विस डायरेक्टली अभी भी यूजर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट अदर सर्विसेज जो हैं जो अपलोड करने के बाद फंक्शन कर रही हैं, उसको मैंने एज अ सब्सक्राइबर बना के सब्सक्रिप्शन सर्विस बना दी उनको, एंड बीच में मैंने एक मिडिल लेयर इंट्रोड्यूस कर दी। Sorry, any questions? किसी को करना है ना, सेवा में निवेदन है कि वो कुछ ना। Abhishek, please mute yourself. We are getting disturbance. Sorry about this. No issue. I thought someone is asking a question. Yes, तो हम डिस्कस कर रहे थे पबसब मॉडल ने इस YouTube अपलोड वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर दिया, उसकी स्पीड को कैसे इम्प्रूव कर दिया, या उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो अभी एग्जांपल में आप देखेंगे कि एंड यूजर जो है अभी भी अपलोड सर्विस से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट उसके बाद की जो सर्विसेज हैं वो हमने एज अ सब्सक्राइबर बना दी, एंड बीच में एक मैसेज क्यू या मैसेज चैनल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये कैसे वर्क करेगा, फॉर एग्जांपल एक एंड यूजर जब कोई भी वीडियो को अपलोड करेगा तो वो किससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, अपलोड सर्विस से, राइट। एंड देन दिस अपलोड सर्विस will publish this data, means this is a
Now this upload service will act like a publisher, and this upload service will publish this content of the YouTube video to the channel message queue, and this message channel has particular topics. So this upload service will publish a particular topic to this message queue, and then this subscriber of this message queue will subscribe information based on their need, right? So upload service क्या करेगी, एक raw MP4 वीडियो को इस मैसेज क्यू पर डंप कर देगी, पब्लिश कर देगी, and there are multiple subscribers running on subscribing this message continuously. तो जब भी कोई कंप्रेस सर्विस देखेगी कि एक रॉ MP4 वीडियो आ गया है, तो वो उसको फौरन सब्सक्राइब कर लेगी, उस टॉपिक को वो फौरन इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेगी, एंड उसको कंप्रेस करके अगेन कंप्रेस वीडियो किस पर पब्लिश कर देगी, मैसेज क्यू पे. Once compressed video or compressed video topic is published to this published message queue, formatting service जो continuously इस टॉपिक्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो देखेगी एक नया कंप्रेस वीडियो आ गया है जिसको मुझे सब्सक्राइब करना है. तो फॉर्मेट सर्विस क्या करेगी, उस कंप्रेस वीडियो को सब्सक्राइब करेगी, उसको फॉर्मेट करेगी, मींस उसके पिक्सेल्स को इंप्रूव करेगी, एंड देन उसको अगेन पब्लिश कर देगी इस मैसेज क्यू. So we have another topic of 480 megapixel video or 1080 pixel video. So compress सर्विस ने क्या करा, इस वीडियो को कंप्रेस कर दिया. फॉर्मेटिंग सर्विस ने क्या किया, इस कंप्रेस वीडियो को फॉर्मेट कर दिया. एंड मीनवाइल अपलोड सर्विस ने जैसे ही अपलोड हुआ यूजर का, अपलोड सर्विस के पास कंटेंट आया, अपलोड सर्विस ने क्या करा, यूजर को इंफॉर्मेशन भेजी कि वीडियो अपलोडेड हो गया, नाउ यू आर डन. अब यूजर को वेट करने की जरूरत नहीं है कि कंप्रेस सर्विस, फॉर्मेटिंग सर्विस या नोटिफिकेशन सर्विस बैकग्राउंड में क्या फंक्शन कर रहे हैं. इससे एक फर्स्ट एडवांटेज तो ये हुआ कि यूजर का टाइम बच गया, उसने जैसे ही अपलोड वीडियो करा उसको फौरन रिस्पॉन्स मिल गया. सेकंड थिंग, जो बैकग्राउंड की सर्विसेज हैं वो अभी चल रही हैं और उससे यूजर को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, उसका वीडियो अगर कंप्रेस एंड फॉर्मेट हो गया और नोटिफिकेशन सर्विस डाउन हो गई, तो मे बी उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको नोटिफाइड हो जाएगा जब नोटिफिकेशन सर्विस अप हो जाएगी, बट उसको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या उसको एरर रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसकी अपलोड सर्विस, राइट. जस्ट सिमिलरली, जब नोटिफिकेशन सर्विस अपना फाइनल चेक कर लेगी कि यहाँ पे 4K वीडियो अपलोड हो गया है और उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो अगेन अपलोड सर्विस को इंफॉर्मेशन भेज देगी, एंड फाइनली यूजर विल बी नोटिफाइड दैट दिस वीडियो विल बी अपलोडेड. इसलिए आप जब देखेंगे कभी भी जब आप वीडियो अपलोड करते हैं या कोई बिगर डेटा अपलोड करते हैं किसी वेबसाइट पर या फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर, तो वो आपको इमीडिएटली मैसेज आता है कि दिस कंटेंट इज अपलोडेड, बट समटाइम इट टेक्स टाइम टू बी नोटिफाइड दिस वीडियो टू अनदर यूजर. फॉर एग्जांपल, आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं या कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर, तो आपको अपलोडिंग का मैसेज इमीडिएटली आ जाता है, बट वो वीडियो या पोस्ट अदर यूजर्स को दिखने में थोड़ा सा मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है. ये इसलिए लगता है क्योंकि बैकग्राउंड में सर्विसेज वर्क कर रही होती हैं, बट आपको जो अपलोड वाला मैसेज है वो इमीडिएटली मिल जाता है, जिससे आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती और बैकग्राउंड में सर्विसेज अपना वर्क करती रहती हैं. तो ये एडवांटेजेस होता है पब सब मॉडल का, जहां हम टॉपिक डिफाइन कर देते हैं मैसेज क्यू में, एक सर्विस वर्क करती है जो कंटिन्यूसली इस मैसेज क्यू में टॉपिक्स को पब्लिश करती रहती है, एंड देयर आर मल्टीपल सब्सक्राइबर्स व्हिच विल सब्सक्राइब दिस information based on their need and will work according to it. For example, हमारा एक मॉड्यूल है जिसमें हम एक्सचेंज रेट यूज करते हैं. एक्सचेंज रेट मींस, फॉर एग्जांपल, हमारा एक पेमेंट है जो हमें ट्रांजैक्शन आया है यूएसडी में और हमें इसको फाइनल सेटलमेंट करना है उसका यूरो में. तो उस केस में ये कैसे वर्क करता है कि हमारी एक सर्विस होगी एक्सचेंज रेट सर्विस, जो कंटिन्यूसली हमें एक्सचेंज रेट के इंफॉर्मेशन देते रहेगी. फॉर एग्जांपल, यूएसडी टू यूरो का आज रेट क्या है, यूएसडी टू यूरो का कल रेट क्या था, या यूएसडी टू यूरो का जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था उस दिन उसका एक्सचेंज रेट क्या था, राइट. तो ये एक्सचेंज रेट की इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली एक्सचेंज रेट सर्विस हमको प्रोवाइड करते रहते हैं. अब बेस्ड ऑन आवर नीड, फॉर एग्जांपल यहाँ एक सेटलमेंट सर्विस वर्क कर रही है जिसको इस एक्सचेंज रेट सर्विस की इंफॉर्मेशन की नीड है, तो ये क्या करेगी, डायरेक्टली इस सर्विस को कांटेक्ट नहीं
देखने के बजाय ये डायरेक्टली मैसेज क्यू में एक टॉपिक चेक करेगी कि एक्सचेंज रेट नाम से कोई टॉपिक है क्या, और उसको डायरेक्टली सब्सक्राइब कर देगी। उस एक्सचेंज रेट टॉपिक में इंफॉर्मेशन होगी की वैल्यू बेस पे हमें, मींस यूरो टू यूएसडी डॉलर का कन्वर्जन होगा। वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके सेटलमेंट का जो फाइनल ट्रांजैक्शन हुआ है उसको उससे मल्टीप्लाई करके फाइनल अमाउंट जो उनको रिसीव करना है मर्चेंट से वो उनको बता देगी। तो ऐसे रियल टाइम एनवायरनमेंट में ये पबसब मॉडल हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं जो पुराना माइक्रो सर्विस मॉडल या दूसरा मॉडल यूज करते हैं उससे? फर्स्ट थिंग जो मैंने बताई आपको, एक सर्वर अगर डाउन हो गया या कुछ इम्पैक्ट हुआ तो आपके टॉपिक तो मैसेज क्यू में है, वो जैसे ही वो सर्वर अप होगा वो उस मैसेज क्यू से टॉपिक को रिसीव कर लेगा, तो मैसेज लॉस नहीं हुआ इसमें। सेकंड, अवेलेबिलिटी रही। एंड थर्ड, ये स्केलेबल बहुत ज्यादा है, मींस मैं कितने भी पब्लिशर यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ जो मेरे एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं, मुझे नई सर्विसेज बनाने की भी जरूरत नहीं। मेरी एग्जिस्टिंग सर्विसेज जो हैं वो अपना डेटा किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, तो उसी डेटा को मैं जैसे ही अपडेट या नया डेटा आता है मैं उसको पब्लिश भी कर सकता हूँ मैसेज क्यू पर, और वो डेटा हमेशा मैसेज क्यू में रहेगा। हमेशा नहीं रहेगा, इसकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उस डेटा को मुझे कब तक मैसेज क्यू में रखना है, कब तक उस डेटा की नीड है, वो मैं अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता हूँ मैसेज क्यू या मिडिल लेयर में। तो जो सब्सक्राइबर है वो इस इंफॉर्मेशन को कभी भी ले सकते हैं। अगेन ये असिंक्रोनस हो गया, मींस अपलोड सर्विस को कंप्रेस सर्विस को अपलोड सर्विस का वेट करने की जरूरत नहीं है, या वाइस वर्सा, अपलोड सर्विस को कंप्रेस सर्विस का वेट करने की जरूरत नहीं है। इसने इंफॉर्मेशन पास कर दी, इसका वर्क डन हो गया। अब नाउ इज द हेडेक ऑफ कंप्रेस सर्विस कि वो कब डेटा फैच करते हैं। थर्ड, इसमें स्केलेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, मींस हमें अपलोड सर्विस को स्केल करने की जरूरत नहीं है, एक अपलोड सर्विस पब्लिश कर सकती है डेटा एंड मल्टीपल सब्सक्राइबर्स को यूज कर सकते हैं। Right? So we will discuss this advantages in more detailed way. Right? That is like it is highly suited for mobile application. Highly suited for mobile application because mobile users can access it at any time, and it has not means mobile user had not don't need to wait for the response, means for the entire application to perform its process. They will immediately get the response. Second, it is robust. Robust means the failure of publisher or subscriber does not bring down the entire system. जैसा कि मैंने बताया अभी कि अगर पब्लिशर या सब्सक्राइबर फेल हो जाता है तो वो पूरे सिस्टम को डाउन नहीं करता, सिस्टम हमारा वर्क करता रहता है। मीनवाइल हमें जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई पब्लिशर या सब्सक्राइबर फेल हो गया, हम उस पर वर्क कर सकते हैं, बट वो पूरे इंटायर सिस्टम को डाउन नहीं करेगा। थर्ड थिंग, स्केलेबिलिटी। जो मेन रीजन है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का या पबसब आर्किटेक्चर का, या जो भी हम नई चीजें यूज कर रहे हैं, इसका मेन रीजन है स्केलेबिलिटी। बिकॉज यूजर दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। मोबाइल यूजर पहले आज से 10 साल पहले जितने थे, अब उसके ट्रिपल या 10 टाइम्स ज्यादा हो गए। तो स्केलेबिलिटी सबसे बड़ा इश्यू है। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, अगर उसमें ज्यादा यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसकी स्केलेबिलिटी, उसको हमेशा अप रखना, हर यूजर को टाइम पर रिस्पॉन्ड करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग भी जब कोई वेब एप्लीकेशन आगे बनाएंगे या कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे या कोई ऐप बनाएंगे आगे चलकर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी स्केलेबिलिटी। मल्टीपल यूजर एक टाइम पर उसको एक्सेस कर सकें। आप लोग पबजी खेलते हैं, उसमें आप एक गेम देखते हैं, उसमें 100 यूजर एक टाइम पे एक्सेस कर रहे होते हैं, राइट? और ऐसे मिलियंस ऑफ यूजर एक टाइम पे एक ही गेम को खेल रहे हैं। तो आप सोचिए इसकी स्केलेबिलिटी उनको कितनी हाई रखना पड़ती होगी कि कोई यूजर, कोई सर्वर डाउन नहीं हो, हमेशा एक साथ मल्टीपल यूजर एक गेम को खेल सके, एंड दैट टू इन रियल टाइम एनवायरनमेंट। मींस वो ऑफलाइन नहीं चल रहा, वो लाइव चल रहा है। सो स्केलेबिलिटी आजकल बहुत बड़ा इशू है, इसलिए हम लोग बिग डेटा पे मूव कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिससे स्केलेबिलिटी बनी रहे। मींस मल्टीपल यूजर एक साथ एक चीज को एक्सेस कर सकें। और पबसब मॉडल का या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का मेन रीजन यही है कि हम इससे स्केलेबिलिटी इंप्रूव कर सकें। सो फोर्थ थिंग इज अडॉप्टेबिलिटी। सो इट कैन बी वेराइड टू डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरनमेंट। हाँ, एक और मल्टीपल मतलब मेन जो यूज है इसका वो ये है
कि हम इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी नहीं आती। सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी कैसे नहीं आती? मीन्स इसको हम मोबाइल, इंटरनेट के एम्बेडेड सिस्टम के यूज कर सकते हैं। अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल लूं तो जरूरी नहीं है कि मेरी अगर एक अपलोड सर्विस C# पर बनी है या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बनी है तो मेरी दूसरी सर्विसेज भी उसी लैंग्वेज में, राइट। मेरी कंप्रेस सर्विस एक पाइथन पे हो सकती है, मेरी फॉर्मेटिंग सर्विस में कोई जावा वेब एप्लीकेशन यूज कर सकता हूँ, मेरी नोटिफिकेशन सर्विस एंगुलर पर हो सकती है, राइट। तो ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होती। हम कोई सी भी लैंग्वेज यहाँ पर कोई सा भी जो भी हम नीड है हम उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने प्रोजेक्ट की फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं तो मेरी एक सर्विस है पेमेंट पेज सर्वर जो बनी हुई है .NET पर। वो इंफॉर्मेशन पास करेगी इस मैसेज क्यू पर, किस फॉर्मेट में? जेसन फॉर्मेट में। एंड जेसन फॉर्मेट इज ग्लोबल। अब जेसन फॉर्मेट के जो यूजर हैं, जेसन फॉर्मेट है उसको कोई भी सर्विस यूज कर सकती है, आइदर वो पाइथन पे लिखी हुई सर्विस हो, आइदर वो जावा पे लिखी हुई सर्विस हो, या फिर वो एंगुलर जेएस हो। अगर मैं यूआई यूज कर रहा हूँ तो वहां में एंगुलर जेएस या जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरी यूज करके मैं अपना एक अच्छे से यूआई बनाऊंगा और वो एपीआई को हिट करेगी जो इस मैसेज क्यू से इंफॉर्मेशन ले लेगी, जो कि जेसन फॉर्मेट है। उसको मैं अपने हिसाब से किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकता हूँ। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। No problem, sir. बच्चों आप लोग को इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा? क्योंकि देखिए ये आर्किटेक्चर जो है ना, ये जो पढ़ाया जा रहा है अभी, ये आर्किटेक्चर अब जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको अपनी खुद की ऐप अगर आपको बनानी है और उसको चलाना कैसे, उसमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कैसे आएंगे, जैसे अभी स्केलेबिलिटी को बताया, तो देखिए आइडियाज हमेशा यंग माइंड से ही आते हैं। तो ये आइडियाज कोई बूढ़े बुजुर्ग सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, तो आपको ये सब चीज़ों का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। तो प्लीज़ बी इंटरेक्टिव, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, है ना, और जितने भी आप क्वेरीज पूछ सकते हैं आप पूछिए, क्योंकि अरबाब सर हमारे साथ हैं और अरबाब सर का हमारा कीमती समय मिला है, तो इसलिए आप इसका यूटिलाइज करें। कंटिन्यू सर। यस स्टूडेंट, तो आप लोग जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं कभी भी। इससे रिलेटेड भी, इससे मतलब जो इससे रिलेट नहीं कर रहा, कुछ आपको नए क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, या आपका भी कुछ मेजर प्रोजेक्ट बनाना है उसमें आपको कुछ लग रहा है ऐसा कि वो इससे रिलेट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन। Yes, so where are we? Now we are talking about adaptability. So this type of environment, this type of model is suitable for different environment and can be used with different technologies. जैसे तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं होता। हम एक सर्विस पाइथन में लिख सकते हैं, एक जावा में लिख सकते हैं, एक एंगुलर जेएस में लिख सकते हैं और एक .NET पे लिख सकते हैं, और सारी सर्विसेज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज एनवायरनमेंट। So everything has advantages and disadvantages. So I have talked about advantages of this model. Now there are certain disadvantages of this model, and that's why it is open to be improved by, as Imran sir said, by young engineers like you. You can improve this model in coming time. So disadvantages of this model is like there are reliability issues. Reliability issues in the sense that there's no strong guarantee that broker will deliver its content to the subscriber. Though there is a guarantee, but there's no strong guarantee. वो उस टॉपिक को रिसीव नहीं करता, तो एक रिलायबिलिटी इश्यूज का एक रिलायबिलिटी किसका एक इशू है। सेकंड इज
potential bottleneck in broker when subscriber and publisher will overload them, right? So अगर multiple publisher publish कर रहे हैं किसी टॉपिक को और multiple subscriber उस टॉपिक्स को रिसीव कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी एक bottleneck आ जाए कि पब्लिशर पब्लिश कर रहा है, मल्टीपल सब्सक्राइबर सेम टॉपिक को रिसीव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ओवरलोड हो जाए। बट ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू लोड बैलेंसिंग टेक्निक। लोड बैलेंसिंग, there are different load balancing technique like we are using in our current system that we will define each request to the different server in a round robin fashion. Means हर request एक server के पास जाएगी, फिर then second server, third server, fourth server, fifth server, and then the sixth request will again come to the first server. So this is the round robin fashion जिसमें हम load balancing technique है, जिससे हम ये इस issues को solve कर सकते हैं। Third and most important thing is its security. Security is an issue because if I am publishing a multiple topic to a messaging queue, then it might be possible that subscriber A, which I am intended to send this topic, but subscriber B will publish this topic. मैं अगर एक टॉपिक पब्लिश कर रहा हूँ इस मैसेज क्यू पर, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि दो सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइबर ए जो के लिए जो मैं टॉपिक भेजा था वो सब्सक्राइबर बी को उसको रिसीव कर लूँ, बट उसके लिए मुझे सिक्योरिटी सिस्टम इसमें इनेबल करना पड़ेगा, जिसके लिए हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या हम अपने सिस्टम में OAuth जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने में। अब सिक्योरिटी मेंटेन क्यों करना पड़ती है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। लाइक जैसे मैंने कहा, इंटेंडेड यूजर्स को सही कंटेंट जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल मर्चेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने सिस्टम की बात करें कि मेरे पास ट्रांजैक्शन आ रहे हैं मल्टीपल मर्चेंट्स के, फॉर एग्जांपल 15 ट्रांजैक्शन मेरे पास पेपाल के आए, 15 ट्रांजैक्शन मेरे पास स्पॉटिफाई के आए और 15 ट्रांजैक्शन मेरे पास एयरबीएनबी के आए, राइट? मल्टीपल ट्रांजैक्शन आए मेरे सिस्टम में, उन ट्रांजैक्शन को मैंने ट्रांजैक्शन टॉपिक पे सब्सक्राइब कर पब्लिश कर दिया, राइट? अब वो मैसेजिंग क्यू में है। अब डिफरेंट सब्सक्राइबर हैं, फॉर एग्जांपल एक पेपाल का सब्सक्राइबर है, एक स्पॉटिफाई का, एक एयरबीएनबी का सब्सक्राइबर है, तो टॉपिक तो एक ही है ट्रांजैक्शन, बट सब्सक्राइबर डिफरेंट है। तो मुझको ये सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़ती है कि पेपाल के ट्रांजैक्शन सिर्फ पेपाल ही देख पाए, स्पॉटिफाई के ट्रांजैक्शन सिर्फ स्पॉटिफाई ही देख पाए और एयरबीएनबी के ट्रांजैक्शन सिर्फ एयरबीएनबी देख पाए। अदरवाइज इट्स अ बिग पीसीआई कंप्लायंस इशू। एक पीसीआई कंप्लायंस टेक्निक वो होता है जो भी पेमेंट डोमेन में लोग हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा पीसीआई कंप्लायंस इशू हो जाएगा अगर पेपाल के ट्रांजैक्शन एयरबीएनबी देख लेंगे, बिकॉज दे आर कंपटीटर, दे विल नो दैट उनके पास किस टाइप के ट्रांजैक्शन आ रहा है और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो अपना सिस्टम उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एक बिगेस्ट सिक्योरिटी कंसर्न है जिसको हम मेंटेन करते हैं थ्रू 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मैं किसी और लेक्चर में डिटेल में बता सकता हूँ, बट हायर लेवल पे समझे तो एक टोकन बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें एक पेपाल एक टोकन बेचता है, हम उसको वेरीफाई करते हैं कि ये पेपाल की तरफ से ही आया है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सेव्ड इन आवर सिस्टम, और फिर उसके हिसाब से हम सिर्फ पेपाल की ट्रांजैक्शन ही पेपाल को दिखाएंगे, एयरबीएनबी के। तो जो ये सिक्योरिटी इशू है, जो ये डिसएडवांटेज है पबसब का, उसको हम ऐसे ओवरकम कर सकते हैं यूजिंग सिक्योरिटी टेक्निक्स। So coming to the conclusion, so PubSub system provides a loosely coupled asynchronous model which is useful in many fields of network utilization. Again, हम PubSub से क्या प्रोवाइड करते हैं? लूजली कपल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारी सर्विसेज इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर वर्क, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर जॉब एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं असिंक्रोनस वे में, एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर द नेटवर्क यूटिलाइजेशन। And second thing is there are several areas which are still open for the research. Like हम इसमें effective routing कैसे कर सकते हैं, कैसे अच्छे एल्गोरिथम लगा सकते हैं जिससे इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, राइट? इफेक्टिव राउटिंग में हम कैसे जो मल्टीपल टॉपिक जो हमने पब्लिश करे हैं मैसेज क्यू में, हम कैसे उसको इफेक्टिव राउटिंग कर सकते हैं कि हर सब्सक्राइबर के पास उसकी इंफॉर्मेशन करेक्ट टाइम पर और करेक्ट वे में पहुंच जाए। सेकंड थिंग इज स्केलेबिलिटी वर्सेस एक्सपेंसिवनेस इशू।
हम कैसे मेंटेन करेंगे कि स्केलेबिलिटी भी हमारी इंप्रूव हो, हमारा एक्सपेंस भी कम हो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि हम सर्वर इंक्रीज करके स्केलेबिलिटी तो इंप्रूव कर सकते हैं, बट वो किस कॉस्ट पे इंक्रीज होगी? हमारी कॉस्ट की। हमारी स्केलेबिलिटी तो बढ़ जाएगी बट हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी इसके साथ। तो आगे रिसर्च किस में हम कर सकते हैं कि हम कैसे स्केलेबिलिटी हम इसकी इंप्रूव करें और उसकी कॉस्ट भी इंप्रूव इंक्रीज ना हो। थर्ड थिंग इज फॉल्ट टॉलरेंस। हम कैसे इसको कम, इस सिस्टम में कम से कम फॉल्ट आए, कम से कम सर्वर डाउन हो, हम कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। एंड फोर्थ थिंग इज अगेन सिक्योरिटी। अभी हम OAuth यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, ऐसे ही सिक्योरिटी के लिए हो सकता है आगे चल के इस पे भी जो हैकर्स हैं या वो अटैक कर सकते हैं। तो हमें रेडी रहना पड़ेगा दूसरी सिक्योरिटी टेक्निक्स के साथ, कि जैसे ही दूसरी सिक्योरिटी टेक्निक्स आए हम उसको अडॉप्ट कर सकें अपने सिस्टम में और अपने सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव और सिक्योर बना सकें। तो आप लोगों के लिए इसलिए ये चीजें हैं ओपन फॉर रिसर्च, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कितना कुछ कर सकते हैं इस सिर्फ इसी फील्ड में। मतलब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक टॉपिक है और एक टॉपिक की एक फील्ड है पब्सम मॉडल, और इस फील्ड में कितनी सारी चीजें ओपन है रिसर्च के लिए, जो कि अभी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा नीड है उसकी। तो आप सिर्फ एक ही टॉपिक को लेकर रिसर्च करें या एक ही टॉपिक को लेकर कुछ इनोवेटिव करें तो आप कंपनी की नीड कितनी फुलफिल कर सकते हैं। एंड नाउ यू हैव टाइम, because now you are in engineering, you have a lot of time, because after engineering you will be busy in job or you will be busy in something else. So now you have open mind. I know you have different subjects, you have 40 subjects in like 8 semester, but still this is the best time you can work on different technologies. Like we have done some mistake, we have started learning technology after our college life, or we have started learning technology a little late, but you have now have time and you now have access as well. आप लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सेस है, आप लोगों के पास इंटरनेट हैंड में अवेलेबल है, यू हैव स्मार्ट मोबाइल। सो आप उसको इफेक्टिवली यूज करिए अपने कैरियर को बेटर बनाने के लिए, until unless आप उसको इनफेक्टिवली यूज करें अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। सो it's a genuine heart to heart advice I will give to any student which I meet. हाँ, अरबाब सर ने बहुत अच्छी बात बच्चों आपके लिए बताई है कि अभी आपके पास जो टाइम है, अभी मतलब आप लोग इस स्टेज में कि आप काफी कुछ अपनी क्रिएटिविटी के लिए टाइम दे सकते हैं। और आज के टाइम में कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम आपके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। पहले तो इतने, आज से 10 साल पहले, आज से काफी टाइम पहले इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते थे। इंटरनेट आज के टाइम में आपके हाथ में हर वक्त है ना। तो ट्राई टू यूटिलाइज दिस टाइम। ओके, तो अर्नब सर, thank you a lot. Thanks a lot. It was really great the way you have delivered the lecture. That was really great. And definitely this is going to help to our students in their upcoming time. So, sir, at last, I extend my hearty thanks to you for sharing this knowledge. Spared time from your busiest schedule to grace this session. And we, NRI College, really looking forward to have you again in upcoming time. Again, thank you so much, Arbab sir. Thank you, Krishna. Thank you very much. And thank you, Okay. Yes. So, student, thank you so much for joining this meeting, and we will be again here for the second lecture as per the scheduled time. And in the last of that session, there will be a feedback form which you have to fill. So, okay, be on the time, and link will be. You guys gonna get the link on the group. Now you may leave the meeting. Thank you so much, all of you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Anand sir. Thank you.